NCW has taken cognizance of Prajwal Revanna's matter. In fact, they have also written to the DGP. Remember, already you have the Karnataka government which is looking in the Karnataka police which is probing this, and an SIT has already been formed. The driver that we are getting you the soundbite of has also now said that he's going to be deposing before the SIT so that the truth can come out. Let me quickly go across to Ankit. Ankit, things getting more serious now. Even the NCW now stepping up the pressure, demanding justice. Absolutely. We have the NCW letter right here, Meghna, by Rekha Sharma, the chairperson, to Shri Alok Mohan. He is the DG and IG of Karnataka. She says in the operative portion, the National Commission for Women has come across multiple media reports indicating that several video clips of sexual nature allegedly involving Mr. Prajwal Revanna, sitting MP for Lok Sabha from Hassan constituency, sexually abusing hundreds of women, were circulated on social media in recent days. The Commission strongly condemns the incident and is deeply disturbed by its occurrence. Such events not only endanger women's safety but also foster a culture of disrespect and violence against them. We urge prompt and decisive action from the concerned police authority to swiftly apprehend the accused who has fled the country. A detailed report outlining the measures taken must be submitted to the Commission within 3 days. So this is the NCW spelling out a 3-day deadline for the police in Karnataka to take action on Prajwal Revanna. 3-day deadline, but can the police in Karnataka deliver, considering Prajwal is all the way across in Munich? Let me take that question across to Imran. Imran, you've been tracking the probe as well. Where has the SIT reached in the probe? And the next big question is going to be if he is going to be apprehended. Right here on Times Now, remember, we got you the entire itinerary, the route which was taken by Prajwal Revanna to flee the country. And interestingly, it was right on the eve of polling day in Hassan, right after the elections happened. The very next day, on 26th of May, the election had happened, and on the 27th of May, early morning at 2 a.m. in the morning, he fled India and went off to Germany, to be precise, in Munich. In fact, Times Now's group editor-in-chief, Navika Kumar, she's spoken to the whistleblower, Devaraje Gowda, the BJP leader who has complained about Prajwal Revanna. He says that the Congress was aware of the Prajwal tapes a lot earlier and is probably involved in the circulation of the videos as well. Listen in. देवराजे गौड़ा जी, इन टेप्स के बारे में आपको किसने बताया, कब बताया और फिर आपने क्या किया? ये हमारा क्लाइंट क्या है, वो तो रेस्पॉन्ड नंबर 82 है, वो मेरे को आके दिया। वो मैं बोला मैं क्या ये डॉक्यूमेंट्स क्या पूछा मैं, वो बोला ये था गंदा वीडियो का टेलीकास्ट करना नहीं करने के लिए तो स्टे ले लिया कर को। जब मैं देखा, मैं दिखो कर को मैं बोल दिया, वो तो पेंडर दिखाए मेरे को, वो उसमें गंदा वीडियो था। मैं पूछा, मैं गंदा वीडियो देखने के बाद मेरे को शॉक हो गया। वो इसके बाद पूछा मैं ये वीडियो किसी को दिया क्या आप? अब बोला हाँ दिया, दे दिया। किसको दे दिया? वो कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट DK शिव कुमार जी है ना, उसको दे दिया। वो अभी 2 महीने हो गया, तभी कुछ भी मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है। मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किया। वो जब मैं उसको भेजने के बाद मैं सुबह मॉर्निंग में नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा जी को और मोदी जी, अमित शाह जी, अरुण जी, हमारा संतोष जी, 4 आदमी को मैं एक लेटर लिख के भेजा। मैं ऐसा एक वीडियो है, मगर कर्नाटक में अलायंस करने के टाइम में बहुत होशियार से करना पड़ेगा। ये तो आसन का MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उसका वो सेक्स स्कैंडल वीडियो है। अब हमारा हम लोग उसका पात हम अलायंस हो गया, तो मगर ये ऑलरेडी ये वीडियो पहुंच चुकी है कांग्रेस नेता के साथ हाथ में पहुंच चुकी है। जब इलेक्शन के टाइम में ये मामला उठाएगा, वो मामला उठाया तो हमारा पार्टी की इज्जत निकल जाएगा करको आपने बताया था, निकलता है करको मैं एक लेटर लिख के भेज दिया था। मगर हमारा बैड टाइम क्या है, वो लेटर डिलीवर नहीं हुआ ईमेल में। जब कभी डिलीवर नहीं हो गया ना, को लेटर हमारा नेता को नहीं पहुंचा है ना, जब मैं हमारा कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट को लेटर लिख के दिया। मैं क्या लेटर दिया, ये सब क्या बताए, वो सभी लिख के मैं कन्नड़ा में लेटर लिख के दिया। वो तो व्हाट्सएप में भेज दिया था, वो व्हाट्सएप नहीं देखा है। इसके बाद मैं ऑफिस में देखा, उसका टेबल में मैं रख के आया, वो भी नहीं देखा है। इसका बाद आज पता चल गया वो लेटर नहीं देखा करको, अभी पता अच्छा, चल रहा है। आपने दिया, वो कर्नाटका BJP प्रेसिडेंट ने देखा ही नहीं। क्या है, वो तो वो देखा ही नहीं, वायरल हो गया। वो दिस इज हाउ सीरियस इट इज। हर जगह में चल रहे हैं, लाखों आदमी वो वीडियो देख रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट क्या है, अभी वीडियो कौन निकाल दिया उधर से, वीडियो कौन कैसा फॉरवर्ड हो गया, वो अभी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो तो SIT वाला करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा वो। क्योंकि तो मैं तो ये मेरा
कक्षीदार है, तो हमारा क्लाइंट है, वो मेरे को दिखाया, वो मैं दिखाया तो भाई वीडियो बाहर नहीं गया वो। मैं और 2-3 प्रेस मीट में भी बोल दिया, मैं ऐसा ऐसा गंदा वीडियो है, तुम्हारा परिवार ऐसा, तुम्हारा फैमिली ऐसा गंदा फैमिली है, वो ऐसा वीडियो है ना बाहर आ गया तो उसका लेडीज का इज्जत कौन सिक्योर करता है, मैं ऐसा बता दिया। मैं बहुत कम से कम 3-4 प्रेस मीट में अभी वीडियो वायरल आ गया। वो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी SIT बना दिया ना, पहले वीडियो वो प्रज्वल रेवन्ना सा मोबाइल से कैसा बाहर आ गया वो, इसका बाद वो नाउ यू वांट you want प्रज्वल रेवन्ना's वीडियो हाउ दे बिकेम, आपको ये जानना है कि वो पब्लिक कैसे हो गया, वो बाहर कैसे आ गया, सबको डिस्ट्रीब्यूशन करता है। नहीं, सो कॉन्स्पिरेसी एंगल आपको जानना है। आपको अब ये नहीं जानना है कि आपकी पार्टी प्रेसिडेंट ने कर्नाटका में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। वाह, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। Well, that of course was the BJP leader who was the whistleblower in the case. However, he says, I complained to the Karnataka BJP president. However, he didn't read the message. Right now, what you can see on your screens, HD Kumaraswamy, all set to hold a press conference. He is, of course, the uncle of Prajwal Revanna. We had earlier the JDS top brass coming out and saying that they are willing to come out and take action against Prajwal. But then also we'll have to wait and see what kind of action, or are they going to defend him? We'll have to wait and see. Any minute now this press conference is going to be held. We'll wait and see what is the kind of action which happens. As you can see right now already, Prajwal Revanna has fled the country. He's no longer in fact, the press conference has started. ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೀಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. Well, with that big breaking news which is coming in first on Times Now, massive Times Now impact after a relentless campaign. Prajwal Revanna has now been suspended. Prajwal Revanna has been suspended by the JDS after intense pressure being put by Times Now and all media houses, as well as sectors of women's reform. The NCW stepped up, and of course the opposition have been gunning for him, and now massive Times Now impact that Prajwal Revanna has been suspended by the JDS. Remember, this has come right after a core meeting which was held of the JDS. Of course, HD Kumaraswamy, any minute now he's going to start speaking at the press conference. Remember, Prajwal Revanna is not just the sitting incumbent of Hassan, but he's also the grandson of HD Devegowda, who is an alliance partner of the BJP. It was a BJP leader who was the whistleblower in this case as well. And now it's interesting to see how Prajwal Revanna, despite the fact that these videos were doing the round, managed to A, get a ticket again from Hassan, and B, managed to flee before he could be apprehended by the police. Remember, the Karnataka police has already set up a SIT. Prajwal Revanna, however, is all the way across in Munich. Here on Times Now, we are getting you details of where Prajwal Revanna is. He flew off to Munich on the 27th, early morning on 27th of May, right after polling ended in his constituency of Hassan. He caught a Lufthansa flight, went off to Munich. From there, we are not quite sure where he is, but that is the last that we heard of him. Let me